So where? Hello. आपके स्कूल से बच्चे जब एमबीबीएस करने जाते हैं ना, जॉर्जिया जाते हैं वो सारे बच्चे. Yes, sir. डू यू नो द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी? So two of the universities now. I think it's TSMU. ठीक है, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही. बट देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज आगे जहाँ पे जाते हैं बच्चे. और बट यू आर प्लानिंग इन इंडिया राइट आलिया, या और कुछ आपने सोचा है अपार्ट फ्रॉम नीट? अभी डिसाइड नहीं किया है सर, तो पता नहीं, नीट के बाद सोचेंगे. TSMU is one of the university. अच्छा, TSMU अब फुल फॉर्म. एक है जॉर्जिया नेशनल, एक है So यूनिवर्सिटी ऑफ mostly these जॉर्जिया. three. These three. Actually, let us start now. By the way, I have like I said that there will be two classes on GOC, GOC1 and GOC2, but the thing is that we are a bit behind in the syllabus. So if time permits, we will do the GOC2. Today we are going to do hydrocarbons. Okay. And in hydrocarbons also there are few concepts from other chapters also, not in the questions but rather in the options. Like let's suppose one of the the main answer is a reaction that is in the hydrocarbon chapter. But the other three options could be reaction that is from another chapters also. But don't worry, है ना, ऐसा नहीं कि हाइड्रोकार्बन ही सिर्फ दिखेगा आपको. You will find some reactions of other chapters also. ठीक है, चलिए. So starting from the first point, this is quite what can I say? Not easy, but rather basic topic of boiling point. So boiling point, it is directly proportional to the number of carbon atoms first of all, and when the carbon atoms are seen, then we will have to look at the branching. If the branching increases, boiling point decreases. ठीक है, तो दो पॉइंट्स जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे कर सकते हैं. First is boiling point directly proportional to number of carbons. In the cases of alkane, at least number of carbons. And boiling point, it is inversely proportional to branching. ठीक है, तो based on this, please try this question. What happened, guys? आंसर आना चाहिए. Look at the option. A, C, A, C.
आ जाएगा आंसर, तो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। So did you receive mine? Oh, yeah, I got your answer. Notification नहीं आया मैसेज का, just give me a second. ओके चलो ठीक है, आलिया और इनका अलग अलग आंसर है, तो देखते करो। सबसे पहले हेप्टेन में यू हैव 7 कार्बन, 4 कार्बन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल में 2 कार्बन, ब्यूटेन में कितने कार्बन हो जाएंगे? टोटल 6 कार्बन। 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन में 3 कार्बन, 2 मिथाइल, देयर विल बी 2 कार्बन, दैट मींस 5 कार्बन। हेक्सेन इज 6 कार्बन, सो सबसे ज्यादा तो ए का होगा बिकॉज इट इज गोइंग टू हैव हेप्टेन। ए सबसे ज्यादा, उसके बाद इट विल बी नॉर्मल। अब देखिए 6 कार्बन में वी हैव सी एंड ई, तो दिस इज नॉर्मल hexane with 6 carbon atoms. I'm erasing this part. Then we have 2 methyl butane, which is going to, oh, sorry, 2 methyl butane is not, my bad. 2 methyl butane is going to be 5 carbon atoms. हमने इसको डाई समझा था. This is going to be 4 carbon atom. Now, butane में 4 carbons, methyl में 1 carbon. A के बाद तो E है, so we have option A. C option नहीं, C option नहीं होगा. A होगा या तो D होगा. ठीक है. अब उसके बाद आपके पास C है, because C is having 5 carbon atoms. सबसे लोवेस्ट जो होगा दैट विल बी डी। क्या आंसर दिया आप लोगों ने? डी और बी। बी तो नहीं होगा, विल नॉट बी बी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आएगा ए, देन उसके नंबर ऑफ कार्बन आइटम पहले देखना है, ठीक है ना। ए, उसके बाद आएगा आपके पास ई, देन आएगा आपके पास सी। ए ई सी का ऑप्शन कहाँ आ रहा है? ए में आ रहा है, ठीक है। गलती नहीं है ना यहाँ पे। ब्यूटेन में 5 कार्बन, 2 मिथाइल प्रोपेन, यहाँ पे 4 कार्बन। हाँ ठीक है, प्लीज राइट दिस। ठीक है, ए ऑप्शन नॉट बी। So, जी जी बताइए। so how is it A? 2 methyl butane में तो there is branching ना. So branching will actually बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। और ब्रांचिंग, boiling point is directly proportional या inversely proportional? Inversely proportional to branching ना। ब्रांच जब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। बट ब्रांचिंग भी नहीं देखना है इसमें, तो नंबर ऑफ कार्बन आटम पहले देखते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन आटम से आ जा रहा है ना, ए ई उसके बाद सी। क्या ख्याल है रम? so मुझे समझ में आया. सबसे पहले क्या देखते बताइए? Carbon atom नंबर ऑफ कार्बन आटम्स। कैप्टेन में कितने कार्बन आटम? 7, 7। ब्यूटेन में 4, 4। 2 मिथाइल ब्यूटेन 4, हम्म 5, 5, 5। 2 मिथाइल प्रोपेन 4, और हेक्सेन 6. 6। सबसे ज्यादा कार्बन आटम किसमें? बोलिए। Heptane हाँ ए। A. उसके बाद फिर सिर्फ E. कार्बन आटम देखेंगे। हाँ सिर्फ कार्बन आटम देखेंगे, जहां कार्बन आटम सेम होगा फिर ब्रांचिंग देखेंगे सी। उसके बाद सी नहीं, ई ना, ई माय बर्ड। ठीक है, ई ई ठीक। Then uh,
कार्बन आटम देख के बताइए। ए ई C. उसके बाद सी। मिल गया आपको। ए ई सी तो यहीं पे ना, बाकी कहीं नहीं है। नहीं आया अभी भी समझ में। आप फिर बोलिएगा नहीं सर यहाँ तो ब्रांचिंग हो रही है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट सर घटेगा, दैट्स ट्रू। बट पहले तो कार्बन आटम कंपेयर करेंगे। क्या ख्याल है? ठीक कह रहे हैं ना Yes, आप, sir. दैट ब्यूटेन और इसमें। ठीक है। तो व्हेन आई एम गोइंग टू कंपेयर ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का यहाँ पे 4 कार्बन और यहाँ पे 5 कार्बन, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? फर्स्ट Yes, ऑफ ऑल वही तो, 5. इसीलिए तो पहले ये लिखा जाता है ना, 5 कार्बन, इस वजह से ए फर्स्ट यू विल सी द बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम पूछे ना ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, ब्यूटेन इज 1 2 3 4, 2 मिथाइल प्रोपेन इज लाइक दिस। ठीक है। यहाँ पे किसकी ज्यादा Hmm. होगी? दिस इज गोइंग टू हैव 4 कार्बन, दिस इज ऑल्सो हैविंग 4 कार्बन। ठीक है। बट बिकॉज यहाँ ब्रांचिंग ज्यादा है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? बॉइलिंग पॉइंट विल बी लोअर, एंड दैट इज व्हाई दिस ब्यूटेन विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 2 मिथाइल प्रोपेन। मेक सेंस? Yeah. Yes, yes, sir. Okay. Yeah. अस्सलाम वालेकुम नबील, am I audible? Walaikum salam, sir. You're audible, sir. Why are you late, Nabil? By the before I forget, there are few announcement. One is that see your class timings will be like this. This Monday na, Monday तो हो गया. Tuesday it is going to be at 9 p.m. IST. ठीक है. Thursday also same time, 9 p.m. IST. Wednesday it will be 6:30 p.m. IST. Please note this down. This Monday is at 4:30 p.m. IST, but after this class, next Monday जो होगा that will be 6 p.m. IST. ठीक है, please note this down. If you have any problem, just let me know now. सर 6:30 till 6:30 to 7:30, 8 के बीच में छोड़ देंगे. 1 hour से 1.5 hour के बीच में कैसे? Hope you have noted this down. No problem ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? Tell me guys. By the way, इंडियन टाइम है, ठीक है ना? आप ये मत समझिएगा जी नबी, टेल मी. Sir, I think I'm okay with this. You're okay ना? Yeah. Try this now. The incorrect method of synthesis of alkenes.
I will let you know what is vicinal dihalide. Vicinal dihalide is when two adjacent carbon atoms, they will have halogen atom. ठीक है, बाकी यहाँ कुछ होगा. So two adjacent carbon atom when they have halogen, we say that it is vicinal dihalide. But one answer. Yes, if I'm correct. Take 1 more minute. Try to make as many products you can. And all of A, B, C, D are reactions. You need to make the products. Yes, Nabil, correct. And here basically, I mean, in the options, majority of the reactions are from the chapter alkene, ठीक है ना, hydrocarbons. But one of the reaction is not from hydrocarbons. You see, like it. Yes, Alia, correct. Very good. ठीक है ना, तो you have identified at least whatever reaction you can. ये याद नहीं, ये याद नहीं, ये दोनों तो याद होने चाहिए भाई, because both of these are from standard 12 itself, right? That is heating alkyl RX in the presence of alcoholic KOH, or RX in the presence of aqueous KOH. This is also one of the famous questions. Here it is going to give you alkene, and here it is going to give you alcohol, right? So if you're doing the D reaction, it is going to give you alcohol, because the D is the correct option. All of these things are going to give you the carbon-carbon double bond, but not the D one. You try this. So, Yeah, tell me. so vicinal dihalide itself is an alkene, right? No, it is not alkene. For example, if you have something like this, Br in this carbon and Br in this carbon, this carbon, both of them are what? Adjacent. आपको ये याद आ रहा है, ये दिस इज विनाइल. विनाइल से आप कंफ्यूज हो रहे हैं. विनाइल में होता है इस तरह से that you have double bond and then you have a halogen here. sp2 carbon directly connected with halogen atom, that is vinyl. ठीक है, not So vicinal. नहीं, तो vicinal जो पढ़ा था ना मैंने, bromide, bromine water के साथ. क्या? So it was a detection for alkenes only, haloalkanes में. हाँ तो एल्कीन, हाँ रुके, एल्कीन के साथ आप Br2 ऐड करेंगे तब विसिनल डाइहाइलाइड बनेगा, वो होता नहीं है ना. So Yeah. vicinal dihalide is not an alkene. You can prepare vicinal dihalide from alkene. But when you react this, no, for example, Br है, आप इसमें Zn लगाएंगे, then this ZnBr2 बनेगा, और यहाँ से आपके पास CH2 double bond CH2 हो जाएगा, plus you will get ZnBr2. ठीक है, चलो.
Take 2 minutes. Everyone has answered till now. Waiting for others. Okay, Alia. Nabil is going with option number A. Can you let us see? सबसे पहले यहाँ पे मीन जो है ना, इट इज गोइंग टू द आंसर इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द नंबरिंग, हाउ यू आर गोइंग टू नंबर इट। तो नंबरिंग के लिए तो एक रूल होता है, उसको आप ध्यान से रखिए। सो फॉर नंबरिंग, numbering starts from that terminal carbon या कॉर्नर कार्बन ना, ये टर्मिनल कार्बन हो गया, ये टर्मिनल कार्बन, ये टर्मिनल कार्बन, ये टर्मिनल, सो दीज आर टर्मिनल कार्बन, ठीक है। तो नंबरिंग यहीं कहीं से स्टार्ट होना चाहिए। दैट टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन, ठीक है, वेयर यू फाइंड द पोजिशन ऑफ, इफ यू हैव एनी फंक्शनल ग्रुप, है ना, फंक्शनल ग्रुप दैट मीन्स जिसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, ऑल, अमीन, है ना, नॉट ब्रोमो क्लोरो, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप should be nearest, take a position of, or functional group will be lowest. Then if you don't have functional group, or you have functional group at the same number of carbon atoms, whether you are going from A terminal or B terminal, किसी भी terminal से, then you have to look multiple bonds, ठीक है। multiple bond के बाद you have to look at हाँ, मल्टीपल बॉन्ड एक चीज याद रखिएगा, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो यू विल सी दैट डबल बॉन्ड इज गोइंग टू गेट लोअर नंबर देन ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद आएगा आपके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, उसके बाद आएगा आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इसको फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड शुड बी लोएस्ट, शुड बी लोएस्ट, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो इट इज सेइंग 2,6 डाइमिथाइल टेक 4 ईन। सो इफ आई लुक एट, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे, यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे अगर आप, देन डबल बॉन्ड इज गोइंग टू बी इन 1 2, ठीक है। 2 कार्बन में तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है इसका। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर देन इट इज गोइंग टू बी 1 2 3, ठीक है। या फिर इफ आई गो, वेट अ सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चूज द मेन चेन। मेन चेन में सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, सब मेन डबल बॉन्ड हो रहा है। सो मेन चेन चूज कर लेते हैं पहले हम। 1 2 3 4, मेन चेन, और यहाँ पे ये वाला मेन चेन हो जाएगा। तो लेट अस सी, आई थिंक बी वाला ऑप्शन हो सकता है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 8 9 10। So we have 2 6 dimethyl 4p इन दिया। If I look at this one, then यहाँ पे 1 2 3 में you will have, and यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। So these options are not right. A option is correct. My bad. A option बोल रहे हैं, B option. B option is correct, not A. ये तो incorrect. ठीक है, copy this down.
Try this. An alkene on ozonolysis gives methanol as one of the products. What is methanol? It is HCHO, aldehyde with one carbon atom. Okay. So what will be the structure of that molecule? उस alkene का structure क्या होगा? Just to remind you guys what is ozonolysis and what happens here. So when you have any alkene, no matter what is attached on either double bonded carbon atom, when on ozonolysis, this bond breaks and you get oxygen here and you get oxygen here. Basically, आपको क्या मिलेगा? You'll get two carbonyl compounds, C double bond O, and the other will also be C double bond O. ठीक है? So all of these are alkenes. आप इनमें bond को तोड़िए और उस पर देखिए कि H आपको किसमें मिल रहा है. Like one of the products should be HCH. So you can see that by ozonolysis, you are only adding an oxygen atom. If you are getting HCHO, तो सिर्फ ये ऑक्सीजन एटम आपको ओजोनोलिसिस से मिल रहा है. ये दोनों हाइड्रोजन पहले से मौजूद होने चाहिए कार्बन. So you should find where do you have CH2 fragment. इस तरह का फ्रैगमेंट कहाँ पे? Because these two hydrogens will be there already. आपको बस ऑक्सीजन लगाना होगा उसमें. ठीक है. अब आसान कर दिया हमने बहुत ज्यादा. Send the answers. Correct, Adam. एक ही आंसर आया भाई अभी तक. देखो CH2 fragment कहाँ पे? बस यहाँ पे तो CH2 fragment. CH2 with the double bond is only in what? Option number A. Just give me a second, please. Okay, guys. So as I was saying, that the only the only alkene which is having double bond CH2 is what? The first one. It will break from here, and this fragment, it is going to give you carbon. It has two hydrogens,
and it will get one oxygen from ozone releases, and it is what? HCHO, ethanol. Okay, so option number A. Chali, moving on. But if you want to see the other products, so here it is not an alkene, so ozone releases nahi hoga, but here if you see, you will get then you'll have CHO like this. So it is not methanol, it is an aldehyde. And here also you are going to get CHO, which is having two carbon atoms, so two carbon atoms and double bond O and hydrogen. If I look at this one, then here the molecule will look something like this: CH2, CH2, CH3, and here we have double bond. So you have the 6 carbon atoms of the ring, but that ring will be broken and it will have double bond O like this and double bond O like this. Okay. So in a ring, you will get only one compound, but the same thing happens. Logic वही है कि double bond टूटेगा and both the carbon atoms which were having double bond, they will get double bond O. Moving on. Try this. Among the following reaction that proceeds through electrophilic substitution. Yes, I'm correct. सही गई यहाँ पे. In this reaction, you have to identify the reagents. ठीक है ना? तो HCl में क्या होगा? We'll have H plus and Cl will be negative, right? H plus and Cl negative. So when you have H plus and Cl negative, so Cl negative is getting attached on the substrate. Substrate मतलब the organic compound, the organic reactant molecule. Now Cl is what? Negatively charged. Negatively charged यानी कि this is a nucleophilic substitution. We had OH, now we are having Cl. ठीक है, तो nucleophilic हो गया. अच्छा, if I look at here, then you are going to have what? This is Cu2, Cl2. Even in Cu2, Cl2, Cu is in what? It is a metal, so it will be having a positive oxidation state. Cl will be having negative oxidation state. Here also it is going to be what? Here it's also going to be nucleophilic substitution. Then if I look at AlCl3 and Cl2, then in this case, this is a reaction that is, नाम आपको याद रहना चाहिए, this electrophilic substitution of benzene rings. Here what happens? We have Cl2. In this, chlorine is what? This chlorine is in zero oxidation state, both the chlorines. But then you have AlCl3. So AlCl3, if you look at the structure, it is only having how many bonds? 3 bonds. And if it is having 3 bonds, that means the total number of electrons is 6 electrons. And when you have only 6 electrons, in that case, AlCl3 is going to be electron deficient. So ये क्या करेगा? यहाँ से एक electron chlorine को लेगा, and this chlorine will attack on the aluminium with its pi bond. और ये chlorine क्योंकि negative charge लेके गया है, this chlorine will be having now positive charge. Now this positively charged chlorine atom is going to attack on the benzene ring because benzene ring is electron rich. अच्छा, what is happening here? Whenever you have UV, something like this, helper, you have heat, electricity, light, peroxide, or any other radical. In the presence of any of these, you will always have radical mechanism. Because you will have carbon or any radical. Like for example, in this case, it is going to have chlorine radical, not, it is neither electrophilic nor it is nucleophilic. It is a what? It is a radical reaction. The reagent यहाँ पे क्या है? It is radical. So radical substitution हो रहा है यहाँ पे, but here you are having SE, electrophilic substitution. ठीक है? This is both, all of these are SN, but this is SE. चलिए, moving on. ये try कीजिए जरा.
ओके गाइस, देखिए whenever दो टाइप के एडिशन होते हैं, there is syn and anti addition. Syn addition में you will have what is happening in this case. We had CS3 is there. We had carbon and carbon. The carbon and carbon are also here, but we have added two hydrogens. ठीक है, आपको क्या मिल रहा है? You are getting two hydrogens. So the two hydrogens can only be added when you have something like this: H2 plus nickel, Pd, or platinum, or rhodium. Any of the catalyst if you are having, then only you will have this type of addition, and you will get cis butene. What happens here is you have metal. In the surface of metal, the hydrogen attaches. And then when you put any alkene that is having a triple bond, so when it is having triple bond, the H is getting attracted like this. So as you can see, when the triple bond is going to change into double bond, the H will be attracted and it will be bonded in this type of fashion, and you are going to get cis butene. Okay. So option is what? Option number D. Please, please. Moving on. Try this. An alkene on reaction with ozone and ZnH2, that is ozone releases, gives propanol and ethanol. ठीक है, in equimolar ratio. Addition of HCl to alkene A gives B as the major product. The structure of the product B is, कीजिए, इसको करना पड़ेगा आराम से आपको. Make an I mean, don't make alkene. Propanol बनाइए, ethanol बनाइए, and then try to think of what alkene is going to give you propanol and ethanol. After you are done with that, what you are going to do, you are going to add HCl, and when you add HCl, it is going to be Markovnikov addition. ठीक है? HCl will be Markovnikov addition. I'm giving you guys 2 minutes for this. No answer till now. There are only 15 seconds remaining, then I will explain this. So please see here, guys. Propanol, first of all, we'll have to make the structure of propanol. So propanol is 3 carbon atoms with a double bond like this. And then you have ethanol. Ethanol is 2 carbon atoms, double bond O. And here you will have hydrogen because it is aldehyde. अब यहाँ पे देखना है, देखिए, for example, I mean, if you want to make the compounds, इसको अगर आपको ना, if you want to convert this to alkene,
You have to remove the oxygen and then join the double bond. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं थोड़ा राइट 90 डिग्री, और इसको हम रोटेट करते हैं लेफ्ट 90 डिग्री. ठीक है, so this is the compound. Now in alkene, what we used to do, we used to break the double bond and add oxygen. Here I will remove the oxygen. अब ये तो हम दिखा दे रहे हैं आपको बिल्कुल ऐसे अच्छे से करके, but you have to imagine this essentially. So this was, if this was the alkene, ये अगर alkene होता, and on the ozonolysis of this alkene you would have got, ये टूटा और आपने ऑक्सीजन लगा दिया. ठीक है, and this is what they are saying, it gives propanol, जो हमने बनाया, this is propanol, and then ethanol. So the alkene would have been this. तो बस बड़ा करके यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं. This would have been the alkene. Now when the lines here, these are terminating at CH3s, these are methyl. We write that CH3 here. This is also CH3, and this is also CH3. Okay, this is hydrogen. Alia, Aram, and Nabil, you understood this part? How I deduced the structure of alkene from the products, yes or no? हाँ guys, tell me, Alia, Nabil, आप लोग तो starting से थे. Aram, what about you? Aram, you would remember this from, I don't know whether you remember this or not, but ये था even in 12th standard it was there. Alia, you got this. Nabil, what about you? Nabil नहीं है क्या? Aram, what about you? Understood this? Yes, sir. I know this. You don't remember this. ठीक है, but Sir, अभी जैसे I know this. हाँ ठीक है, वो मेरी गलती है. और नबील ने मैसेज में लिखा आई डोंट रिमेम्बर दिस, तो हमने उससे पूछा था. ठीक है, आई नो यू विल रिमेम्बर. नबील, यू गॉट इट नाउ ना. ठीक है, तो दिस इज आवर एल्कीन वी आर हैविंग. ठीक है ना, दिस इज आवर एल्कीन. अगर इस एल्कीन को थोड़ा सा हम ना ठीक कर लेते हैं. लाइक इफ आई चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इट इज 1 2 3 4 कार्बन हियर. तो 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, एंड सेकंड कार्बन 1 2 3 4, सेकंड और थर्ड कार्बन डबल बॉन्ड, एंड सेकंड कार्बन इज हैविंग अ CH3. कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल हो जाएगा. ये सब प्लीज टेल मी. ठीक है, अब दे व्हाट दे आर सेइंग इन इक्विमोलर रेशियो. ठीक है, दैट मींस ब्रेक हुआ एंड एडिशन ऑफ HCl, वी आर गोइंग टू ऐड HCl. A gives B as the major product. तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है. तो व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? 1 2 3 Markovnikov addition. In Markovnikov addition, you have to identify the carbon atoms that are having double bond. So this carbon atom and double bond, this carbon atom will be double bond. Then you have to count the number of hydrogen on each of the double bonds. So the double bond here, it will be having 0 hydrogen. The double bond here will be having 1 hydrogen. So according to the Markovnikov addition, not anti-Markovnikov, according to the Markovnikov addition, negative part of the reagent goes to that carbon atom which has less hydrogen. तो लेस हाइड्रोजन में जाएगा नेगेटिव पार्ट. तो HCl में पॉजिटिव पार्ट H है, बस Cl क्या नेगेटिव पार्ट. So I'll make everything apart from the double bond. I'll make everything apart from the double bond and then add chlorine on that carbon which is having lower number of hydrogen. So here you will add chlorine. तो अब ये देख लीजिए कहाँ पे. This is the structure I think ना. CH3 CH3 Cl, CH3 CH3 Cl, CH2 CH3, CH2 CH3, B option. Copy this down. ठीक है, I hope you have written this down. Try this. A hydrocarbon reacts with bromine by substitution. By substitution. ठीक है, substitution से हो रहा है, not by addition. हाइड्रोकार्बन अगर substitution से ब्रोमीन मिल रहा है, that means it's what? It is going to be, बोलो. Substitution से it is hydrocarbon react to form an alkyl bromide, which
by Wood's reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atoms. 4 कार्बन आटम से कम। देखिए दिस इज बेसिकली ना वो एप्टीट्यूड टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि उसके मदर के फादर के बेटे के बुआ के भतीजे का क्या होगा, बट इट इज इन केमिस्ट्री लाइक दैट, है ना, वही सेम चीज है। रिश्ता ही तो होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिश्ता ही तो एक है, वो रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसके रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का बेटा का वो वैसे ही सवाल, तो दिस इज कम्प्लीटली एप्टीट्यूड, बट वो केमिस्ट्री के लेवल में पूछ रहे हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में। इन जनरल क्या चाहिए किसी भी फील्ड में, आपको एप्टीट्यूड सही होना चाहिए विद द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। सिर्फ नॉलेज से नहीं काम चलेगा, है ना, यू हैव टू अप्लाई, आई मीन उस तरह के एप्लीकेशन भी आने चाहिए। तो एप्टीट्यूड चेक करते हैं बस यहाँ पे। चलिए 1 more minute, आप थोड़ा तब तक दिमाग लगाइए। अब चलिए, ओके आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, यस नबी, करेक्ट, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेइंग हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहा है, तो देयर इज सम हाइड्रोकार्बन, लेट अस सपोज ए, इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन Br2, ठीक है, और यहाँ पे इट इज हैविंग सब्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या क्या होता है। हाइड्रोकार्बन विल बी एल्कीन, एल्कीन प्लस Br2। एल्केन में दी ओनली ऑप्शन दैट इट इज हैविंग, इट इज सब्स्टिट्यूशन, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। व्हेन आई लुक एट एल्कीन, ठीक है, एल्कीन प्लस Br2, इट में देयर मे बी सम सब्स्टिट्यूशन अकरिंग और एडिशन भी हो सकता है यहाँ पे। For that, you have to look at alkene. So, for example, what are the alkenes or alkynes? Same case, alkyne may be. Alkyne may be because we are having a pi bond. There can be addition with, I mean, substitution भी हो सकता है और addition भी हो सकता है, depending on the alkyne that or alkene we are having. अब if you look at this particular alkyne that we are having, it is only having a carbon-carbon triple bond. ठीक है? So, whenever you are going to have a substitution ना, तो उसमें sp3 कार्बन होगा। मान लीजिए आपके पास कोई alkyne होता है इस तरह का, 1 2 3 कार्बन एटम, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। So here we had this carbon and this carbon which are sp3 hybridized. Here substitution can take place और यहाँ पे addition होता है. But that's not the case in the A structure. Both the carbon atoms are sp hybridized. There is no sp3 carbon atom. तो जहाँ sp3 carbon atom है वहीं पे क्या होगा? You will have substitution where you have saturated carbon atom. So here you will not have any substitution. यहाँ पे आपके पास substitution तो नहीं होगा, bromine का at least नहीं होगा. Here also you are having what? A carbon-carbon double bond. Both of them are sp2. There is no sp3 carbon. कोई saturated carbon नहीं है. Here also you will not have any substitution. Here you can have substitution, but if you are going to react this with Br2, if you are going to react this with Br2, then you will be getting, sorry, you are only having 2 carbons ना, तो आपको 2 कार्बन एक तरह से Br से मिलता है, ठीक है। But then they are saying that you have to do Wood's reaction. So Wood's reaction क्या होता है? Sodium in the presence of dry ether, it gives you carbon atom. The product will be having double carbon atoms and the reactant. तो product में आपको मिलेगा 4 कार्बन।
बट ये कह रहे हैं कि लेस देन 4 कार्बन होना चाहिए, तो लेस देन 4 कार्बन पॉसिबल ही कहाँ पे, इट इज ओनली इन द डी स्ट्रक्चर। इन डी स्ट्रक्चर व्हाट वुड हैपन, यू विल हैव this, it will react with Br2, it will give you CH3Br, it will react with sodium in the presence of dry ether, it is going to give you CS3 and CS3, that is ethane. Please copy this down. ठीक है, so halogenation via substitution is possible only at sp3 carbon. All of it are yes or no, please tell me. Yes, sir. Try this. Correct order of acidity. So acidic strength, it is directly proportional to the stability of the conjugate base you are getting. So in all of these conjugate base, hydrogen निकलेगा and you will have charged carbon with a negative charge. So this carbon atom can be either sp hybridized, which is in the case of triple bond. It can be sp2 hybridized, which is in the case of double bond, and sp3 hybridized, whether it is, I mean, it will be in the case of carbon-carbon single bond. Now in sp hybridized carbon atom, these carbon atoms are more electronegative. They are higher in electronegativity. Okay. Why they are higher in electronegativity? Because it is having 50% S character. So what happens with 50% S character? If it is having 50% S character, then the orbitals will be closer to the nucleus, and the orbitals, they contain negative charge. If the negative charge is closer to the nucleus, it will be having more attraction. If it is having more attraction, then in that case it will be like the sp hybridized carbon at sp hybridized orbitals, they will be pulled more closely or more easily towards the nucleus. Okay? That is why these are more electronegative. If it is more electronegative, that will be more stable also. ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान देना। अब देखते हैं आप सबसे पहले, we have a case in which we have CH triple bond CH, then we have CH3. Okay, this is fine. This is, I think this A option is only correct. And then do we ये चाह रहा है ना सब में, सी देखिए C तो हो नहीं सकता, इस पटाइए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे, so here we have sp, both of them are sp. यहाँ पे you have sp2 and sp2. ठीक है, here you have sp carbon, here you have sp carbon. Now this sp carbon, it cannot be having less acidic strength than the sp2, तो B option भी नहीं होगा. Only correct option is A option, because in this case क्या difference है पहले structure second structure में, both these hydrogens are what, ionizable, and you can remove any one of them. But in the second case, you have only one hydrogen which is ionizable. That is why it will be a bit difficult. It will be a bit less acidic. Also, one more reason of its lower acidity will be the plus I effect of CH3. The CH3 is going to what? Donate electron density and make the negative charge that is appearing on the carbon atom here bit more negative. और उसकी वजह से stability थोड़ी decrease करेगी इस case में. But again, it will be always greater, I mean, greater in stability than the sp2 carbon. A option आपका सबसे सही होगा. Please copy this down. इसको लिख लीजिएगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है sp का सबसे ज्यादा, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3. सबसे पहले C को देखते हैं. After that, we are going to look at plus I effect or minus I effect. अगर कहीं पे कुछ हो रहा है तो
एक सवाल देखिए उसके क्लास में। This was in the method of preparation of aldehyde and ketones. आधा आंसर हमने बता ही दिया। This is hydration of alkynes. Hydration of alkynes. That's correct. Very good. Take one more minute. Carbon-carbon double bond. Carbon-carbon triple bond you are having. Try to add water. So one carbon will get OH, the other carbon is going to get hydrogen. So think what is the negative part in H and OH? What we have OH part and H part. So what will be negative part? And Markovnikov addition karaiye. Once you do the Markovnikov addition, you will get the intermediate. Now that intermediate is going to get converted because of tautomerism. Time is up. See range. तो यहाँ पे आपके पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C. कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है आपके पास. Now you have water. Water has what? H plus and OH negative. Now you have to add H in one carbon and OH negative. So OH negative is going to be what? Negatively charged. It is going to attach on that carbon atom which is having lesser number of hydrogen. So you have these two carbon atoms. यहाँ पे आपके पास 0 hydrogen है, यहाँ पे आपके पास 1 hydrogen है. So it is going to attach on this second carbon, the middle carbon. You have like this. Triple bond to double bond because addition is happening. You'll get OH here. And here you are going to get, here you had initially 1 hydrogen, you will now have 2 hydrogens. Now this, if you look at the OH molecule here, this hydrogen is what it is? Quite delta positive. This is quite delta positive because oxygen is pulling electron density from the hydrogen atom. And here you will find electron density because of the pi bond. Due to the presence of pi bond, it is what electron rich part. So you have delta positive and you have electrons in the pi bond. So obviously positive and negative, they will attract each other. So these negatively charged electrons will go like this. And then it is going to, जैसे ही यहाँ जाएगा, this hydrogen is going to leave the electron density to the oxygen atom. It will make a double bond like this. And this hydrogen is abstracted by this CH2. It will become CH3. The pi bond is broken because the electron in the pi bond has been shifted to hydrogen. Okay. So here you are going to get what? Propanone. Or you call it acetone in normal phases. So this is a common name. So first of all, you have enol. This is known as enol because it is having a double bond, and the same carbon atom is also having a hydroxy group. So I think C option में ऐसा हो रहा है. CH3, this is enol, and this is the ketone